You turn on the tap and water flows, clear, easy, and instant. But what if that same tap ran dry tomorrow? In cities that report near perfect water access and in mountains that have trusted natural water resources for generations have been seeing an increasing barrier to access, quite often leading to unequal access, overuse, and fragile systems pushed beyond their limits. Welcome to episode 12 of Rooting for the Grassroots. Today we look at how water security is being challenged from urban villages to Himalayan streams and how young champions are responding. On paper, Chandigarh reports over 99% household access to safe drinking water. It is officially declared open defecation free. But step into rural pockets like Halo Majra and a different story emerges. Irregular water supply, leakages in distribution lines, dependence on shared and community water points. Add to that inadequate drainage systems and poorly maintained toilets in village areas, and hygiene risks expectedly increase. The infrastructure exists, but access, maintenance, and equity remains fragile. And as we go on to the Indian Himalayas, water doesn't come from pipelines. It comes from nature itself. Over 50% of people in the region depend on natural springs, streams, and rivulets for their daily needs. In Mukteshwar, one single stream has been the lifeline for 5 villages, nearly 600 families. Each family uses about 500 liters a day, meaning almost 3 lakh liters are drawn daily from this one source. But tourism growth and new homestays have increased extraction beyond natural recharge levels. For the first time, villages that depend entirely on it are facing water shortages. From urban villages in Chandigarh to mountain communities in Uttarakhand, water security is revealing its cracks. And despite that, our young climate champions are stepping forward, strengthening systems, restoring balance, and ensuring that water remains a right, not a privilege. Let's now hear from the champions working at the grassroots. I'm NYCC Climate Champion from Chandigarh. Hi, happy to be here. My name is Ananya Rana and I was born and brought up in Chandigarh. I think my journey with climate and environmental action started during the pandemic time, while everyone was being asked to stay home and maintain proper distancing. I read about communities where people would crowd around a single public tap just to get water. No mask, no distancing, no security, just a horrible reality of survival. Since then, I started reading about climate change. I started asking questions. I started noticing how things like climate change, poor infrastructure, inequality, they are all tangled together. Recently, Chandigarh came across as the top second cleanest city in the major cities of India. But still, when we hear of development, it should come across as an inclusive thing, a development that is for everyone. But when we talk about Chandigarh, there are certain areas which are still not developed and still they do not have access to clean water, basic sanitation, and which leads to many waterborne diseases and other diseases also. So for Chandigarh, I feel it's very important for youth to lead these kind of initiatives, take part in these sort of initiatives and help the community, and just to make the city revolve around a very inclusive path. My problem involves region that's on the outskirts of Chandigarh. It's called Halo Majra. So there people live in very cluttered spaces, 4-5 people residing in one home, and they do not have access to clean water. There's one single public tap wherein they are supposed to take water from. So my solution includes solving the problems of this community. So my solution also includes curating climate vulnerability index, wherein I'll be surveying the needs of these communities, understanding the kind of problems they are facing, get into the depth and not just take data but also take live testimonials and their stories. So when we are presenting it to the authorities, it does sound something meaningful. So that's why I've decided to take this initiative. I will be presenting the findings to the local authorities, pushing for meaningful and purposeful change. So at NYCC, I honestly just want to absorb everything. I aspire to grow both as a learner and a leader.
I'm really looking forward to understanding how we can work together to curate climate solutions that are inclusive and rooted in community needs. And I'm also exploring how we can understand the interdependencies of climate change, poor infrastructure, and inequality all at once. मैं हूँ NYCC जलवायु चैंपियन उत्तराखंड से। मेरा नाम तनुप्रिया जोशी है और मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और उत्तराखंड में ही रह के मैं अभी तो वन गुज्जर्स कम्युनिटीज़ हैं उनके फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर उनके राइट्स के लिए एडवोकेसी करती हूँ। सो बेसिकली आई एम एसोसिएटेड विद अ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, जहाँ पे हम कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट गवर्नेंस का काम करते हैं थ्रू वन पंचायत। बट अभी क्या हो रहा है कि उन वन पंचायत को जो गवर्नमेंट है वो अपने अंडर लेना चाहती है। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट ऑल्सो। वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के साथ रह के हमने एक मॉडल क्रिएट किया है इन भालूगढ़ वाटरफॉल। सो बेसिकली वहाँ पे जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है एंड कम्युनिटी वहाँ पे मैनेजमेंट भी कर रही है, वाटर कंजर्वेशन भी कर रही है और अपना एम्प्लॉयमेंट भी चला रही है। सेम मॉडल जो है वो हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं इन अनदर एरिया ऑफ मुक्तेश्वर। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग देयर इज दैट देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ दैट सरोवर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अराउंड उत्तराखंड। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो सेम मॉडल भालूगढ़ वाटरफॉल में रेप्लिकेट किया था वही हम सेम यहाँ पे भी रेप्लिकेट करें और हम मैनेजमेंट उसका कम्युनिटी को प्रोवाइड करें। NYCC में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व में करना चाह रही हूँ वो यही सरोवर को कंटेमिनेशन की, सरोवर के मैनेजमेंट की और अनफिट जो टूरिज्म वहाँ पे अराउंड होता है उसके लिए मैंने अप्रोच किया है। बेसिकली अभी तक जो भी मैंने क्लाइमेट एक्शन पे काम किया है अपार्ट फ्रॉम माई लिटिगेशन वर्क, वो मैंने एक थ्रू NGO किया है। तो उसमें एक इंडिविजुअल जो हमारी कैपेसिटी होती है वो ऑब्वियसली वो थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन लोगों के पास जाने जाते हैं, बट NYCC हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट जो है, प्रपोजल जो है वो वहाँ पे दें और उसके साथ हमें NYCC रिसोर्सेज देगा, ऑब्वियसली फंड हमें मिलेगा जो हमें बैक एक करेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो एक आउटसाइन होने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि हमें कम्युनिटी के लिए काम करने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर हमें पॉलिसी चेंज कुछ लाना है तो उसके लिए एडवोकेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। और युवा जो है जब तक हम उनको नॉर्मल हम अगर कुछ एक्ट वहाँ पे कर रहे हैं तो वो समझेंगे नहीं, बट अगर हम थ्रू एडवोकेसी, थ्रू ट्रेनिंग सेशंस उनको ये सारी बातें समझाएंगे और उनके माइंड में एक गोल सेट करेंगे या फिर उनको जो भी हमारा अगर वहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है तो हमें उनको ये रियलाइजेशन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाटर जो है ये आपकी ही नीड्स के लिए वहाँ बना है। तो वो उनको तभी समझ में आएगा जब हम उनको वहाँ पे समझाएंगे, एक पॉलिसी चेंज लाएंगे। तो इसीलिए आई थिंक एडवोकेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। यूथ एंड गवर्नमेंट को मुझे लगता है साथ में काम करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यूथ जो है वो हमारा सबसे बड़ा अभी एज रिसोर्स जो है वो हमारा यूथ ही है। तो अगर यूथ और गवर्नमेंट मिलके काम करेगी तो एक हमें जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मिलेगा। Working with the communities of Halu Majra, our climate champion Ananya in Chandigarh is turning lived realities into data for change. Through her initiative Flow Forward, she has mobilized youth volunteers to document water access, sanitation gaps and climate risks in Halu Majra. With academic backing and collaboration with the Municipal Corporation and Punjab University, she is working to bring community evidence directly into urban climate planning. Meanwhile, in the hills of Uttarakhand, Tanupriya is working to restore community stewardship over Himalayan streams. Across villages in the Mukteshwar Bhovali region, she has engaged youth, one panchayats and local communities to document stream use, climate stress and governance gaps, building a shared foundation for community-led water protection and stronger rights over local water resources. Being a NYCC champion, I feel it's about showing up with curiosity, compassion, and with a strong commitment to lead with the purpose and intention. NYCC में आना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है। To follow more such stories of resilience and climate action happening across India, be sure to like, share and subscribe to our channel and explore the resources linked below. We are rooting for the grassroots. Are you?